ज्ञानं ज्योतिररविन्दः ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्दः ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्दः ॐ सत्यं ज्ञानं ज्योतिररविन्दः Yeah, so welcome everyone. Let us start. I hope we spend some time in gathering. So today I thought we can take up this prayer. It's a beautiful, very practically relevant prayer for us. Okay. August 17, 1913. Yes. So who would like to read out the prayer for us? No one? Yeah, Monica, I'll read. Okay. August 17, 1913. O Lord, Master of our life, let us soar very high above all care for our material preservation. Nothing is more humiliating and depressing than these thoughts so constantly turn towards the preservation, preoccupations with health, the means of subsistence, the framework of life. How very insignificant is all this? A thin smoke that a simple breath can disperse, or a single thought turned towards thee, dispel like a vain mirage. Deliver those who are in this bondage, O Lord, even as those who are the slaves of passion. On the path that leads to thee, these obstacles are what are at once terrible and puerile. Terrible for those who are yet under their sway, puerile for one who has passed beyond. How shall I describe that utter relief, that delightful lightness which comes when one is free from all anxiety for oneself, for one's life and health and satisfaction, and even one's progress? This relief, this deliverance, thou hast granted to me. O thou divine master, life of my life and light of my light, O thou who unceasingly teachest me love and makest me know the purpose of my existence. It is thou who livest in me, thou alone. And why should I be preoccupied with myself and what might happen to me without thee, the dust constituting this body that strives to manifest thee, would disperse, amorphous and inconscient. Without thee, this sensibility which makes possible a relation with all other centers of manifestation would vanish into dark inertia. Without thee, this thought that animates and illumines the whole being would be vague, vacant, unrealized. Without thee, the sublime love
which vivifies, coordinates, animates, and gives warmth to all things would be a yet unawakened possibility. Without thee, all is inert, brute, or inconscient. Thou art all that illumines and enraptures us, the whole reason of our existence and all our goal. Is this not enough to cure us of all personal thought? To make us spread our wings and soar above the contingencies of material life, so as to fly away into thy divine atmosphere and be able to return as thy messengers to the earth to announce the glorious tidings of thy approaching advent. O divine master, sublime friend, marvelous teacher, in a fecund silence I bow to thee. Thank you, Monica. Beautiful message. Thank you for reading. Thanks. Hmm. So many, many, many pointers hidden in this prayer. Many, many, many. As always. So who has this taste of suffocation when we are, I can raise my hand, when we are solely concerned, at times there are dark clouds where we are just bothered about me, my story, what will happen of me, my relationship, my work, my respect, name, fame, emotional satisfaction, financial security, the suffocation that it causes. Mother says that how humiliating and depressing these thoughts. Anyone who doesn't have the taste of this? Humiliating and depressing. I don't know what has happened with this. Doesn't let me. Uh-huh. So when mother says that these thoughts so constantly turn towards the preservation of the body. So it's not just all the things that we are concerned about, like food and financial security and roof above our head, the education and all that. It's not just that, but also what will happen in my life, what would happen of me. Will I be satisfied? What about my satisfaction? We strive so hard to satisfy ourselves emotionally, mentally. So later on, mother says about that also, that one's satisfaction, one's progress, all the thoughts which are basically concerning me, this limited me. How depressing and humiliating. And then I also found this very, very beautiful and so amazing, this part where she says how very insignificant is all this, and when it is happening then it does not appear like insignificant. Whenever we are absorbed in those thoughts, then that is the only thing that matters. It just occupies my whole mind, emotion, space, and even one is just totally obsessed with whatever one is thinking about. But when one has gone past that little bit of cloud, then we can see that actually it is like a thin smoke, what mother shares here. How very insignificant is all this, a thin smoke that a simple breath can disperse. That's why mindfulness helps a lot at times whenever one is able to just come back to the breath, that right now I'm all well, I'm so functional, relatively, mind is healthy, emotions are there, body is not lying in the hospital, so many things which are good. So bringing the mind to breath or the body, there we realize that all is well. So
bringing the mind and bringing the presence to the present moment, we see that actually it is able to disperse all that dark cloud that was building up. Or what can help is a single thought turned towards thee. That also dispels like a vain mirage. All of us, I'm sure, must have experiences of this. है ना, जब कोई भी चीज बहुत सता रही होती है और हमको अगर उससे दूर जाना है, हमको नहीं और अपने आप को टॉर्मेंट करना, एज वी वर रीडिंग इन द लास्ट prayer in some other session, there if we turn ourselves to Mother Shri Aurobindo, taking their name, some mantra, some chanting, it actually brings us a lot of relief in that very moment when our thoughts are turned towards them. So both of these are very helpful, either bringing the mind fully to the present moment with the help of breath, which Jetsunma also talks about, that how then we realize that all the thoughts are nothing but just empty bubbles and they are making themselves so big and so important. And the other line that we were reading nowadays in Savitri, atomic illusion lost its aggrandizing lens, and atomic looked the things that loomed so large. तो फिर इतनी बड़ी नहीं लगती वो, फिर लगता है ठीक है, अच्छा हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो भी ठीक है, because our satisfaction is in the divine, that we realize that. So very relevant for our day-to-day turmoils and all the challenges that we have to go through on this path. And also that when Mother says, let us soar very high above all care of this me and limited self. Soaring high also, in one sense we can say that raising our plane of consciousness, not lying all the time in the egoistic consciousness, which is full of suffocation, nothing else. So we change the floor of our being. First floor पे कचरा ही कचरा है, and now we shift to 10th floor. Again, it's not easy to remain on the 10th floor all the time, but we get a kind of a relief when we are on the 10th floor, if we are able to access either deep within or high above. Then we see that, things are not that bothersome. I can still survive and I can go through and I can maybe learn from these turmoils that are coming, so as to see that what is the highest possible state for me. Where is all of this turmoil pushing me towards? So anything on the first paragraph, anyone? And also the liberation that one feels when one is not self-occupied, है ना, हमको उसके भी glimpses हैं. Just like we have glimpses of suffocating ourselves with the thoughts of me and my story and all the things that goes on with me, we also have glimpses of relief, and when we are selfless, there is no thought about me that is bothering me. All of us must have glimpses of that. Kuch selfless work, something very absorbing that we are doing, or doing something for others that we are, where I is not there, when me is not there, how relieved we feel, easy. So then, as always, Mother includes everyone in her prayer, as Mother does it in every prayer almost. And we also see that in Tonglen meditation or Tonglen practice in Buddhist tradition, where if I am feeling very painful or going through something which is very disturbing, then I connect with my own pain, and I also connect with all the people who are going through this pain as I am going through. How painful it is, how suffocating it is to be in the egoistic state, or maybe some other physical pain that one is going through, something, some disease one is going through.
So we connect with our own pain, and then we take that moment to connect with the pain of collective. That now I know how difficult it is. How now I know this pain which is so bothersome. Now I have a taste of that. So we connect with the pain of the collective, and then we inhale with the inhaling breath. We inhale that pain and suffering, and with the exhaling breath we give everyone peace and joy. May everyone have relief from this suffocation. So that's what Mother shares in the second one. Deliver those who are in this bondage, O Lord, even as those who are the slaves of passion. So कुछ तो होंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उससे निकलने के लिए, और कुछ हैं जो अभी स्ट्रगल ही नहीं कर रहे, वो तो उसमें ही मस्त है, मग्न है, निर्लिप्त है, लिप्त है उसके अंदर. उनको पता भी नहीं कि वो इतना इट्स सच अ ट्रबल कॉजिंग फेज देयर दे आर submerging themselves into. So those who are either in this bondage, who are feeling that it is very suffocating and want to get out of it, and those also who are totally involved in it, totally passion, in the sense that कुछ बाहर से मिल जाए, कुछ बाहर से मिल जाए, running here and then helter skelter, that something or the other will satisfy me. Yes, Sharda ji. Yeah, Monica, is it not this Tonglin? Yes, that's what I shared, that it's related to the Tonglin practice. Yes. Okay. Yeah. What's the spelling of tongue? Tonglin is a Tonglen. So if you type it on YouTube, you will get many practices where teachers are sharing how to do this. It's very helpful when one is in the middle of suffocation and pain, and it immediately, when we do this practice, is as if we make use of our own pain, and we also get rid of the pain also, because now you are not bothered about the pain, whether it is there or not, you are using it. So it's very helpful if one can do it. So on the path that leads to thee, these obstacles are at once terrible and puerile. Terrible for those who are yet under their sway, कि अभी पकड़े जाएंगे, है ना, जिनको अभी लग रहा है अभी तो बहुत मस्ती छा रही है, बाद में पकड़े जाएंगे, उनके लिए terrible. Puerile for those who has passed beyond. Puerile means childish, or like silly, like you see things like we do in childhood, and now we look at it and then we say, oh, how childish, right? So now we will not be able to do that, but earlier we did that. So when we look back at those, if we have passed beyond, we will say, oh, how childish I was. But when we are in it right now, in the sway of it, then it will bring me pain sooner or later. When I'm in bondage of all the thoughts about me and myself and my passions and wanting satisfaction from outside. So at once they are terrible and puerile. और जो उससे निकल चुके हैं, some friend was sharing, this reminds me, one of my friends, acquaintance, friends, whatever, she was sharing about somebody else who has also gone through a little bit of, one can say, a lot of challenge and turmoil personally in relationships, undergone a separation and something more also. But now, अब हम धीरे धीरे ही सीखते हैं, इतनी आसानी से हम सीखते नहीं हैं. So now that person is again involved in seeking satisfaction in outside relationships, or when this thing was being shared with me, I felt so pained, like अभी पिटाई होगी, like क्यों उसमें जा रहे हो, बहुत पिटाई होगी, so terrible. और क्योंकि जो I'm not saying that I'm out of it, but जो उससे गुजर चुका है, जो निकल चुका है, जो वो करके देख चुका है कि कितनी पिटाई होती है, and how what is the fun here where you are involving yourself, उसके लिए वो childish हो जाता है. बट जो उसके अंदर बिल्कुल मग्न है, उसको अभी नहीं पता लग रहा कि कितनी जबरदस्त पिटाई होने वाली है. ऐसी चीजों में बहुत पिटाई होती है.
especially passions. Passionately, when we run after these satisfactions, either physical, emotional, mental satisfaction. बुढ़ापे में कौन साथ देगा? हाँ, that you are alone and now you want some company, है ना. एक तो मजे की बात ये है कि जब भी हमें रिक्तता मिलती है लाइफ में, हम उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते, उसके साथ हम रहना ही नहीं, एकदम से भर लेते हैं फिर से कचड़े से. तो वो हम सबने अपनी लाइफ में देखा होगा, कुछ फ्रेंडशिप के नाम पे, कुछ एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. वो आपने वो रिक्त रहने ही नहीं दी, उस प्रेग्नेंट होने ही नहीं दिया उस साइलेंस को, फ्रॉम विच इज द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएटिविटी. एकदम से फिर से भर लिया क्योंकि सहा ही नहीं जा रहा था इतनी लोनलीनेस. ये हम सबके साथ. Monica, हाँ जी, sorry, what did you say? You said riktata. रिक्तता. यस. Sorry? एम्प्टीनेस. यस. emptiness. Okay, that is riktata. रिक्तता. Actually, रिक्त मतलब एम्प्टी. हाँ. Oh, okay, okay, all I right. would like to share some feeling that thanks to these classes, you start questioning yourself कि अंदर जो emptiness है वो ये है, तो मैं क्या हो रहा है, I'm not sensitive, I'm not able to understand other things, these questions you put. But when you understand that this रिक्तता is actually a bliss, वो peace हो रही है, mother force काम कर रही है कि आप शांत हो, तो उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लगाते हैं कि हाँ, ये पता नहीं सही है नहीं सही, मैं सही तरफ जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वी ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर पर्सन्स हु आर, इसको हम वो तो नहीं लेंगे कि लिप्त हैं वो अपने, वो स्पिरिचुअल एरोगेंस नहीं आई वांट टू शो, बट ये जैसे जस्ट नाउ यू शेयर्ड कि हम उसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं और सामने वाला उसमें जा रहा है, तो एक दुख होता है कि अरे क्यों जा रहे हो वहां पे, कुछ नहीं रखा है वहां पे. बिल्कुल. और ये भी दिखता है कि कितनी सुंदर अपॉर्चुनिटी आई थी. जब भी हमारे जीवन में ट्रेजेडी आती है, अपॉर्चुनिटी, इट्स लाइक अ अपॉर्चुनिटी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. उनकी लाइफ में एक ट्रेजेडी टाइप आई एंड विच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्पेस इन हर बीइंग. बिल्कुल. अब हुआ क्या कि फॉर अ मोमेंट आई बिकॉज आई वाज कम्युनिकेटिंग विद हर फ्रॉम टाइम टू टाइम, आई बिकेम वेरी happy for her because now she has space for some creative impulsion in her life which she can fill now with beautiful things. But अब जब ये पता लगा कि वो fill up अब किसी और चीज से हो गया, again the thing is that divine certitude is there and even through that experience she will learn only as we all learn through our challenges and turmoils. But ऐसा उस समय ऐसा लग रहा होता है कि जरूरत थोड़ी ना है उस दर्द की, लेकिन अब हाथ बढ़ा दिया, अब दर्द की तरफ फिर से हाथ बढ़ा दिया. ऐसा नहीं लगता है कि ये जो रास्ता है जो सीधा जा सकता था, वो उसकी वजह से वो टेढ़े रास्ते, टेढ़ा हो जाता है, कठिन रास्ते से माँ भेज रही कि ठीक है तुम अपने ढंग से समझना चाहते हो तो समझो इसको. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन वही है कि मुझे लगता है कि ये टेढ़ा इसलिए हो जाता है और होना जरूरी है, इन द सेंस होगा ही होगा, क्योंकि अगर मेरे में अभी इम्प्योरिटीज बाकी हैं, वो तो होंगी, अगर क्या वो तो होंगी. हाँ, इन द सेंस कि समथिंग आउटसाइड विल अट्रैक्ट मी, आई विल एक्चुअली टेक दैट डिटूर ओनली. वो जो लंबा वाला पाथ आप बात कर रहे हो ना, कि वो फिर मैं पिट पिट के ही जाऊंगी क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है. उसी से तो मुझे पता लगेगा कि इम्प्योरिटी थी. एग्जैक्टली. और जब प्योरिटी आएगी तो मैं आई वुड बी रादर कन्विंस्ड कि चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, आई विल बी एबल टू एंड्योर दैट एम्प्टीनेस. ना कितना भी दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमें दर्द नहीं होता एम्प्टीनेस में, सबको होता है ना, क्योंकि अभी उसका टेस्ट नहीं है. बट मैंने ये देखा है कि अगर प्योरिटी इंक्रीज होती है हमारे जीवन में, तो आप फिर उसको सहना शुरू कर देते हो, उस रिक्तता को, है ना, कि मैं रहूंगी इसके साथ, मुझे नहीं भरना है इसको ऐसी चीजों से जो मुझे पता है कि नहीं ठीक है मेरे लिए, है ना. सो डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है कि आप किसके साथ होते हो और कहाँ जाते हो. तो वो मायावी जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, हम चले गए, लेकिन फिर वहां जाके समझ में आता है कि जो मेरा रास्ता था वो ठीक था, ये सब फिल्मी है, ये सब टेम्पररी है, इसमें कुछ है नहीं. But at the same time, it gives us opportunity to understand ourselves and practice our yoga also. That being in this world, you can maintain. I just want to share my last night's experience. You were talking about endurance and pain. और स्ट्रगल कर रहे थे वो बार बार वो सारी टेक्निक करते हुए कि फिर ऊपर वाली मंजिल में जाकर, लेकिन वो बार बार
जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ ब्लू कोई चीज आ जाए विच वाज अनएक्सपेक्टेड, देन आई थॉट दैट प्रोबेबली आई ऑलवेज प्रे कि मेरे ईगो को जो है ना, ईगो की जो लेयर्स होती हैं हमें समझ में नहीं आती हैं कि हम तो अब ईगो को कर रहे हैं, बट दिस सर्कमस्टेंस पर्सन इज ब्लेमिंग मी continuously for half an hour, 1 hour, एंड द सीनियर पर्सन जो मेरे से, तो मुझे जैसे अभी कहा ना कि थोड़ी दया सी आ रही थी कि अरे एक लाइक मैंने नहीं किया आपकी पोस्ट को तो आप कह रहे हैं कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो और मैंने तुम्हें होम करते हाथ होते हैं मैंने तुम्हें बना थिंग्स लाइक दैट। तो वो क्वेश्चन करना बार 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 बार, फिर समझ में आया कि नहीं ये नहीं, दिस ये जो पेन हो रहा है दिस हैज बीन गिवन टू यू so that you can endure the pain and remain and understand that there are shades of ego which needs to be come out in front of you so that you can recognize that where is your ego lying, and you have to practice on that also. And then in the morning which I shared lines that these when I opened and these 3 lines were there and I बट बिल्कुल कांस्टेंट प्रैक्टिस को अभी भी थॉट जो है आ रहा है, लेकिन बिल्कुल मुझे यही लगा कि ये जो प्रैक्टिस हम लोग जो भी कर रहे हैं ये हेल्प करता है उस सिचुएशन, अदरवाइज उस सिचुएशन में हम आर्ग्यूमेंट करके अपने आप को और रायता फैला देते, पछड़ा कर देते। वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया कि ठीक है आपको है मतलब, बट विद बाय मदर्स ग्रेस होंगे, बिल्कुल नॉट बिल्कुल माय एफर्ट, बिल्कुल not my effort. बिल्कुल And it is fact that there was incident and I prayed mother very seriously, very sincerely, mother I want my feelings to be very good, I don't have any complaint against her and she should understand, I am not able to understand why she is behaving like that. So she called me and she said you will be तुम्हें आश्चर्य होगा ना मेरा फोन पाके। तो मैंने कहा नहीं मुझे खुशी हुई, और फिर बाद में मैंने उन्हें बताया कि वो पेन इतना ज्यादा था मेरे लिए कि मैंने मदर को प्रे किया कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तुमने इंट्रोस्पेक्शन किया कि क्या, हमने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलती की है, तो वो आपने कॉल किया इसीलिए क्योंकि मैंने मदर से प्रे किया था। That's all I wanted to share. So today's prayer is so apt, so apt. बिल्कुल ब्यूटीफुल, Every prayer is very very helpful, no doubt in it, no doubt in it. यस, थैंक यू फॉर उसको शेयरिंग। कहते हैं ना जैसे कण कण अपना जो है ग्रेटिट्यूड में बस हाथ खड़े होते हैं कि यू सेव्ड मी, यू सेव्ड मी। नहीं तो पहले अगर सिचुएशन होती तो इसी में लिप्त रहते, क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। आई एम सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई लगता है। नहीं, आई थिंक टोटली up to what we were sharing, so thank you for sharing. And this is how, as you were sharing, that the points where our imperfections are, weaknesses are, it comes out and it comes out for cleaning. So totally resonate, yes. Yeah, anything more anyone wants to share or add here now that we are at it? I had a question. Anji? Monica, can you hear me? Can you hear me? Yes. Yeah. Yes. Okay. So, इससे पहले जो हम डिस्कस जो एग्जाम्पल आप दे रहे थे कि वो वापस उसमें फंस गए जैसे रिलेशनशिप में या कुछ भी, सो I mean, how does one know कि suppose now today only I was reading Sri Aurobindo's quote that it's not the activity but the intention with which you do it. So similarly for career or for relationship, right? लाइक जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे खुशी हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, क्योंकि मैं काफी स्टबर्न रही हूँ और मैं मतलब उस टाइप से हूँ कि अकेले रहना पसंद करती हूँ, ये वो तो सब मुझे टॉन्ट करते कि कोई इसके परफेक्शनिस्ट आइडियाज पे खड़ा नहीं उतर सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मतलब इट्स लाइक एन इनसाइड जोक। तो बट मुझे अच्छा लगा आपने बोला, मैंने कहा हाँ कुछ तो ठीक हो रहा है शायद। बट ये मुझे लग रहा था, सो आई मीन आई लाइक बीइंग अलोन इवन दो yes at times it is, you know, as you shared, it's like difficult, but I enjoy it and prefer it than being somewhere I don't resonate.
उससे मुझे बेटर है और कि मैं अपने आप रहूं. But my question is regarding relationship. Like, how do you decide whether you should go? I mean, maybe you come across somebody you resonate with. I don't know. It hasn't happened to me, but I am just thinking aloud that how do you know? Maybe mother sends somebody who is supposed to हाँ like हाँ be your partner बिल्कुल on the बिल्कुल path, बिल्कुल आप but ना वो sometimes, या बट समटाइम्स yeah, I mean, I just want to know that, like, या how do you know? Yeah, so I would recommend you to read actually because it's a very complicated, it's not black and white. Now, in crux, we can of course share here what we mean by जो भी हम बात कर रहे थे, but it would be very nice to read that little compilation of Mother Sri Aurobindo on sadhana through human love. I had shared that earlier. I would maybe share it again, maybe today on the group. क्योंकि ऐसा relationships are not a problem is our demands, expectations and wantings of satisfaction from the relationship, जो कि जिस तल पर अभी हम जी रहे हैं, you can be pretty sure that they are there. We are not above in a kind of a yogic state like Nolinida or somewhere high above, that we can be in relationships and yet be very detached. We must have some detached relationships. I'm not saying that we will not have detached relationships in our life right now, but this kind of relationship जहाँ पे vital engagement, physical engagement जहाँ पे होना शुरू होता है, वहां पे as a rule चिपचिपाहट बगल में खड़ी होती है. एज अ रूल, इट इज अ रूल. आप ये बोल ही नहीं सकते कि वो चिपचिपाहट नहीं है. आप चख के देखो, खुद आपको पता लग जाएगा. एक्सपेरिमेंट, वी शुड एक्सपेरिमेंट. सो why I shared that example is because I know what the intention is, because I know that case very dearly. Yes, that I तो understood. उस केस में It I just, know that the yeah, intention is yeah. not a very nice intention, है ना, to fall In into other fact, relationships. हाँ. yes, I understood that. It just made me reflect on my own life in a deeper way. But in fact, when you were sharing, one thought really came to me, which is helping me as a measure is attention. It is to look within and reflect that is the intention just to get out of my loneliness, or Yeah. is the intention that I am flowing, Yeah. and this thing that is coming is coming along with the flow and also going along with the flow to me where I am going. बिल्कुल Is it that, or is it that I am, my intention, is it that I'm escaping the loneliness or something like that? So there I have to, वही वो चिपचिपाहट की जो बात है ना. और होता क्या है, देखो, जब हमारी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आती है, चाहे वो बड़ी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आई और उस समय आप बड़े नॉन चिपचिपे थे, है ना, बट जो इंटेंशन थी आपकी बिल्कुल खराब नहीं थी, बट क्योंकि हमारी ईगो अभी भी है, डिसॉल्व नहीं हुई है, लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट. तो होता क्या है, जब वो जाने लगती है तो वो तकलीफ देती है. जब वो आई थी तो बड़े मजे आए, है ना. अब वो जा रही है या कुछ आपके डिमांड के हिसाब से नहीं हो रहा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा, तो वो तकलीफ देगी. इसी को तो कहते हैं, और वो जो सावित्री में हम पढ़ते हैं कि एक दूरी तक हमारा खुशी जा सकती है, उसके आगे वो जाती ही नहीं है, और इट सून टर्न्स इनटू डिसअपॉइंटमेंट. प्लेजर दैट वी गेट फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट वी हैव इन मटेरियल वर्ल्ड एक दूर तक जाएगी, एज इफ इट इज सर्कमस्क्राइब्ड. उस पे किसी ने एक धागा खींचा हुआ है, एक कुछ धारी बना रखी है, वो उस दूर तक जाएगी, उसके बाद वो दर्द देना शुरू कर देगी. हमारा सबका ये एक्सपीरियंस होगा, किसी भी रिलेशनशिप ले लो, कोई भी चीज ले लो, जिसने आपको एक बार खुशी दी, क्या उसने आपको वो दुख नहीं दिया कभी? क्या वो हमेशा ही खुशी देती रही? तो ये क्यों होता है? क्योंकि वी लिव ऑन द प्लेन ऑफ इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस.
So relationship is not a problem. Problem is that we operate from the ego center. And that is why sadhana becomes necessary, क्योंकि वो फिर बार बार दर्द होगा, बार बार डिसअपॉइंटमेंट होगी, एक्सपेक्टेशन डिसअपॉइंटमेंट, नहीं हुई आपके हिसाब से तो डिसअपॉइंटमेंट, और चीजें आपके हिसाब से होंगी नहीं, बिकॉज लाइफ हैज इट्स ओन प्लान फॉर ईच एंड एवरी वन. तो बार बार दर्द झेलोगे, बार बार दर्द झेलोगे. तो and it is not about wanting to be alone or interacting with people, all of that is very secondary, all of that is very secondary, but it is a very great mark in progress. They say, masters have said, that if you begin to enjoy your own emptiness, it's a great mark. Still there are many marks, further marks to be crossed, but yet it is a very good development if you have started to enjoy your own beingness and you are not craving for just some company. क्योंकि यूजुअली जो हम कंपनी की क्रेविंग करते हैं ना, हम कहाँ से कर रहे होते हैं, हमको वाइटल एंगेजमेंट चाहिए होती है, since we are living from the vital soul, the desire soul. Yes, yes. तो उसकी वो satisfaction, उसकी craving होती है. All these vital engagements, emotional engagements, chattings with each other, है ना, धीरे धीरे अगर वो कम हो रही हैं आपके जीवन में, तो इसको बड़ा अच्छा संदेश माना जाता है कि अब आपका जो वाइटल भी है वो भी, इसका मतलब डिवाइन की तरफ टर्न करने लग गया है, कि उसकी वाइटल सेटिस्फेक्शन बाहर से नहीं आ रही, अंदर से आ रही है. बड़ा अच्छा है ना संदेश, अच्छा है ये, गुड साइन. तो बट अगेन मेनी more milestones to come. This is not enough, but this is a good beginning. This all Sri Aurobindo shares in Letters on Yoga. I'm just paraphrasing him. Yes. Thank you. Thank you. And two things I reflected on while you were sharing is that in relationships, two mistakes we do, which are patterns, is that hum instead of having our own divine, हम उस इंसान को अपना भगवान बना ले, and इसीलिए we make him or her the source of everything, our happiness and all that. And and the second thing, and that's why, I mean, we have so many rules in the relationship कि wife ऐसा होना चाहिए, husband को ऐसा होना चाहिए. It's like one of the biggest intentions for a relationship, if you have goodwill for progress for each other. बस अगर एक ये है, that too in the depth of the heart. Like I feel you can't decide it by what practices the person is doing outwardly. शायद outwardly वो कुछ भी reading ना करता हो, लेकिन अंदर से वो बहुत जुड़ा हो, you know. So the only defining mark can be goodwill for progress for each other. And if that is there along the journey, even if the rules and the roles of each other change as per needs, क्योंकि वो होते हैं changes, you know, even if those roles and rules change, one happily goes along because that intention for progress is for each other is still there. और जब वो नहीं होता तो सब ego then comes in and uses everything to break down each other. I mean, that's what I'm reflecting right now. Yeah. And also ये जो आपने बात करी ना भगवान की, हम उसमें भगवान देखते हैं, तो उसमें भी actually in synthesis of yoga, the chapter the sacrifice and the lord of sacrifice, तो उसमें श्री अरबिंदो कहते हैं कि देखो, अगर हमने बोला कि मैं तुझ में भगवान देखता हूँ, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ भगवान तो लिमिटेड है नहीं ना. तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसमें दिखता है और बाकियों में नहीं दिखता? नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो in synthesis of yoga, the sacrifice chapter, Sri Aurobindo says that whenever you are giving or offering yourself, he talks about the heights and pinnacle of human love there. If somebody is interested, one line comes. He says कि आपने दिया, क्यों दिया? क्योंकि आप किसको दे रहे हो, चाहे आप किसी में भी दे रहे हो, चाहे अपने लवर में दे रहे हो, चाहे आप किसी स्ट्रेंजर को दे रहे हो, आप उस एक को ही तो दे रहे हो, क्योंकि हर जगह वो एक ही तो है.
तो वो जो आपने बात करी कि भगवान को कि किसी में भगवान मानना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे भगवान को फाइनाइट कर देते हैं। हम कहते हैं कि तेरे में भगवान है, उसमें नहीं है। वो गड़बड़ हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी आपकी एटीट्यूड, आप देखो ना कितना सुंदर एटीट्यूड हो गया। अगर हमको सब में, अगर हम किसी के लिए भी कुछ कर रहे हैं और हम ये सोच के करें कि मैं भगवान के लिए, भगवान ही भगवान के लिए कर रहा है, या मैं हर जगह भगवान है जो व्याप्त हैं, सर्वव्यापी हैं, उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल एटीट्यूड। Beautiful, beautiful. He says this about help also. If you help somebody, हाँ, then you think about that you are not helping. You are not helping. The divine is helping to the हाँ, divine. बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये कहते हैं कि अगर मान लो किसी से आपको रिजेक्शन भी आ गया, तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो भी तो भगवान से ही आया। और जा किसको रहा है, अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो भी भगवान, मतलब और कुछ है ही नहीं। मतलब हर जगह अगर पानी ही पानी है, पानी में डाला पानी, अगर पानी ने रिजेक्ट कर दिया तो पानी में चला गया, तो परेशानी की क्या बात है। तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि ऑफन टाइम इन ह्यूमन लव वी गेट वेरी डिसअपॉइंटेड इफ यू ऑफर समथिंग एंड इट इज रिजेक्टेड, but you can't stop offering like that. If it is any drop of pure love is there, you won't just shut your heart off and you will say अब तो मैं offer ही नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि देखो हमेशा disappointment होती है। That is not a possibility, because heart has to open. So but heart has to open, but the attitude will change, that who did I do for the divine. So all is well. The opportunity that you got to serve the divine in the other person, isn't that beautiful enough? Beautiful. है ना, वही And enough this line is also very helpful. Rejection. This है। gives such a relief. If you are rejected, if somebody is, then also you should not feel कि reject हो गए. ठीक है, उसने किया लेकिन divine कोई rejection बिल्कुल किया. बिल्कुल बिल्कुल। Very helpful. हाँ, it's actually really very helpful, क्योंकि often times we feel very disappointed when we try to open our heart to anybody, and there is a different expectation, doesn't happen according to that, and you get something else which you did not expect, so you have disappointment कि मेरा प्यार ठुकरा दिया गया। या मेरी भावनाओं को समझा नहीं हाँ, गया। मेरी भावनाओं को समझा नहीं। तो उसमें अगर आप ये एटीट्यूड ले लो कि कम से कम आपको ऑफर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि अपनी भावनाओं को आप अर्पण कर पाओ, क्या वो एनफ नहीं था ना? ये किसी, देखो हम गिविंग को बहुत बड़ा तवज्जो देते हैं, लेकिन हम जो रिसीव कर रहा होता है उसको हम तवज्जो नहीं देते। मुझे लगता है यहाँ पे हम थोड़ा फिसल जाते हैं। तो आप ये सोचो कि इफ यू आर गिविंग somebody is the receiver, he is giving you the joy of giving. If he is not receiving, how will you be able to give? So the very fact that he was your whatever patra or object of giving, चाहे कोई भी रिएक्शन आया, रिएक्शन अभी भूल जाओ, वहां से क्या वापस आया वो भूल जाओ। The very fact that the space was there so that you could offer yourself a little, that itself was enough. This has given me another light. जो आपने दिया वो दिया, उसको याद रखो। जॉय ऑफ गिविंग, उधर से क्या आया वो भूल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। रिजेक्शन आया, एक्सेप्टेंस आया, क्या आया भूल जाओ। कि आपको अपना दिल खोलने का मौका मिला, नहीं तो हम बिल्कुल सकोच के, देखो प्यार में यही तो होता है, even in our day-to-day relationships with siblings or parents or whatever, what do we do? You must have noticed, जब आपको बहुत ही सुंदर कोई चीज लगती है, आप क्या करते हो, जो आपको बहुत क्लोज है आपके, आप वो उसके लिए थोड़ी बचा के रख लेते हो। Have you seen that happen? आप क्या करते हो, उसमें वो सेल्फलेसनेस अपने आप आ जाती है कि नहीं, मैं अभी एक और खा सकती हूँ बाइट, बट लेट मी सेव इट फॉर द पर्सन टू टेस्ट, जिसको अच्छा लगता है ना? एंड दैट गिव्स जॉय, इट ओपन्स अवर हार्ट। वो अलग बात है कि वो बंदा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने बोला नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, तो तुम उदास हो जाओगे, लेकिन उदास की बात ही नहीं है, तुमने अपना काम कर दिया, तुम अपना काम करना नहीं छोड़ोगे, है ना? तुम अगली बार भी रखोगे या कुछ और करोगे, व्हाटएवर दिल से जो भी फील होता है ना? वो उसकी प्रॉब्लम है कि उसको नाउ दैट्स अदर पर्सन्स लर्निंग दैट ही हैज टू लर्न हाउ टू रिसीव।
वो उसकी साधना है, बट हम अपनी साधना तो करें. Beautiful. So yeah, this is all sadhana at the level of vital and relationships and human love, how it can transcend and go further at the heights of human love actually. Or everything that we have in our day-to-day life can become a raw material on the path of sadhana. Nothing has to be discarded. So ये सारा is available. There is now a new compilation by Oro ebooks, sadhana with sadhana through human love. अच्छा. Yeah. And in Letters on Yoga also, Sri Aurobindo talks about these vital impurities and how they have to turn to the divine. And also to one of the persons, one of the sadhaks in the ashram, we had read that anecdote. Some of you may have also read in some book which I don't remember, where Sri Aurobindo actually kind of coaxed that person to fall in a relationship. So we can't imagine Sri Aurobindo would do that, but he wanted him to get a taste of that. क्योंकि वो बहुत संकुचित सा था और बहुत ज़्यादा kind of tied up in himself, so he wanted him to taste it. So he is asking things like, did you get in touch with her or something like that. But later on, when he wants to fall for it, then he shares, no, there you don't have to go. Was it Amrita? कौन था? हाँ, I think अमृता. अमृता वो रोज जाते थे तो उनसे वो पूछते थे, आप अमृत जा रहे हो? तो when he went for, मतलब काफी आगे निकल गए रिलेशनशिप, वो शायद शादी करना, तो कहे तो फिर आपने मुझे जाने क्यों दिया? It was अमृता. हाँ बिल्कुल, थैंक यू. यस. तो वही है कि आप स्वार्थ हर चीज का ले लो. एवरीथिंग एक्सपीरियंस वी हैव टू, ऑफ कोर्स वी थ्रू एक्सपीरियंसेस वी ग्रो. लेकिन जहां उसने वो बात करी कि वो चिपकने की बात आई ना कि चलो अब शादी कर लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं बस इतना बहुत है. सो वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वी कांट इमेजिन, है ना. तो वही कहते हैं कि देयर इज नो फॉर्मूला. वो पूछते थे, वो जो टाइमिंग होती थी, अमृता जब जाने वाले होते थे मिल, तो अमृत जा नहीं रहे हो तुम? तो वो जो जिस टाइम पे वो जाते थे पूछते थे तुम जा नहीं रहे हो? तो वो सोचते थे कि सैंक्शन मिल गया मुझे तो. बिल्कुल बिल्कुल रिलेशनशिप का. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Do you remember in which book was that, this anecdote? I'm forgetting. It is probably in Mahayogi Sri Aurobindo. I have. अच्छा, अगर आपको कभी दिखे ना तो you share. Okay, It would be nice to share. I'll see and I'll share. Yeah. Anything more? Anyone at this moment? Okay, so going further, how shall I describe that utter relief, that delightful lightness which comes when one is free from all anxiety for oneself, for one's life and health and satisfaction, and even one's progress. Very interesting. It seems to me that this can only be, or even a glimpse can only be, that in that moment where we are totally at the feet of the divine and we want nothing else in life, totally content, there we are free from all anxiety about ourselves. There is no issue, worry at all. There we have glimpses of these moments, at times. And even one's progress, because we don't have to worry about, because we are sitting at the feet of the mother or we are with the mother all the time. फिर क्या चिंता क्या है? चिंता क्या है? चिंता ही बात ही क्या है चिंता की, जो when you start your journey, ये प्रॉब्लम बहुत होती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे हो तो लगता है कि अरे प्रोग्रेस की क्या चिंता करना है, ठीक है. तो you are sitting here as you said, the feet of mother. योगा जब माँ ही कर रही है तो हमें क्या चिंता करनी है? बट यही है ना कि यहाँ पे एक थिन लाइन आ जाती है. अब योगा तो माँ कर रही है, लेकिन हमसे बहुत कुछ डिमांड है.
वो फिर कहीं ऐसा ना हो कि पूरे पैसे वो के बैठ गए, अरे कर तो रही है माई होगा, नहीं और बाकी हर जगह अपना एफर्ट जा रहा है, चाय भी जाके ढूंढ ढूंढ के बना रहे हैं कि अच्छा आज कौन सी पत्ती डालें, वहां सारा एफर्ट जा रहा है, बट जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा है ना, तो वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है. This relief, this deliverance thou hast granted to me, O thou, divine master, life of my life and light of my life. O thou who unceasingly teachest me love. ये देखो हम जो बात कर रहे थे ना, how to love we learn slowly, how to truly love. O thou who unceasingly teachest me love. कैसे प्यार, how to love, how to be love, how to have that presence of love in us, and makest me know the purpose of my existence. Why are we all here at all? So mother says that you have granted me this relief. Through your grace, I have this relief that I am not anymore worried about this little entity called me, because she is utterly at the feet of the divine only. So this relief thou hast granted to me. And that's why she is asking that may everyone have the share of this relief. जो हम sharing of merit करते हैं ना, that whatever little merit, whatever little prasad we may have got, we share it with all. या तो कर सकते हैं हम अपना पेट भर लें कि मेरा हो जाए, है ना, होता है अक्सर गुरुद्वारे से बड़ा अच्छा हलवा मिलता है. तो मन तो कर रहा होता है कि बस खा जाओ, और भूख लगी है तो और मन करता है कि यार देते तो रहते हैं अक्सर, इस बार खा लेते हैं. लेकिन अगर वहां पे अपने आप को रोक लो और बोलो कि नहीं, मेरा अब माना भूख लगी है बट मेरे मुंह में ही गया, चलो और भी लोगों के मुंह में जाए, that is joy, that is very, it's delight, it opens our heart. पेट खाली है बट हार्ट ओपन हो जाता है. beautiful. This happens with me, this 2 days ago I was eating a mango, and it was a big mango, quite big and very very juicy mango, very juicy. It was ये जो आजकल सफेदा जो आता है ना वो वाला था. And usually I like safeda because it's very juicy and usually taste is very neutral. So I was having that, and after 2 pieces I actually paused. It was a very funny moment for me. I said either I can eat the last big bit that is left, or I can actually share this with somebody because that was the last piece that was left, and maybe share that delight that I had, the juice and the rasa of that fruit. And thankfully I was able to stop. I was hungry, I could have eaten everything, but I stopped, and that gave me, what mother says, that when we step back from desire, it gives us delight, it gives us joy. So it was very delightful to see that I could stop at least there in that moment and to offer it and share it with others. क्योंकि यूजुअली हम लोगों से वो शेयर कर देते हैं कि चलो ये मुझे नहीं खाना, मैं तो मैं दूसरों को खिला देंगे. अक्सर यही हो रहा होता है कि ये वाला बिस्किट हम नहीं खाएंगे तो चलो शेयर कर दो. बट वहां पे शेयर करना जो आपको बहुत पसंद है और आपके पेट में पूरा जा सकता है, बट आप रुक गए. सो देयर वी exercise the opening of our heart. So for me it was a very revelatory experience. So thou who unceasingly teachest me love and makest me know the purpose of my existence. Why are we here at all? Are we here to satisfy ourselves through all the material things, sense inputs, or are we here to grow further to the heights of our beings? What is our purpose? It is thou who livest in me, thou alone. And why should I be preoccupied with myself and what might happen to me? Without thee, the dust constituting this body that strives to manifest thee would disperse amorphous and inconscient. Without thee, this sensibility, which makes possible a relation with all other centers of manifestation, would vanish into a dark inertia. Without thee, this thought that animates and illumines the whole being would be vague, vacant, unrealized.
Without thee, the sublime love which vivifies, coordinates, animates, and gives warmth to all things would be a yet unawakened possibility. So everything, each part of our existence, we owe to the divine presence in us, which we forget, क्योंकि बाकी चीजें इतनी important हो जाती हैं कि ये दिखता ही नहीं है कि हम जिंदा हैं, we are alive and kicking, and mental and intellectual and heart faculties all are operational. And what a grace that the divine is alive, kicking in us. Without thee, all is inert, brute, or inconscient, like a stone. Thou art that illumines and enraptures us, the whole reason of our existence and all our goal. Is this not enough to cure us of every personal thought, to make us spread our wings and soar above the contingencies of material life, all the the anxieties about material life, so as to fly away into thy divine atmosphere and be able to return? So she's not just saying, this is the quality of integral yoga. She's not just saying just to fly away in the divine atmosphere. She's also talking about the return. This is what we see in Savitri also. She doesn't want all the boons for herself. She wants it for the earth consciousness. So she doesn't stop so as to fly away into thy divine atmosphere. She says, so as and be able to return as thy messengers. ये यहाँ पे काम है. So that each thought, each feeling, each interaction of our life, each word that we speak is informed by that higher light that we have touched. Wheel alignment कहते हैं ना जिसको. So each wheel in our being is aligned to that alignment, that higher alignment. क्योंकि उस हायर अलाइनमेंट का टेस्ट हुआ आपको ऊपर जाके, ऊपर के तल पे जाके उस हायर अलाइनमेंट का आपको टेस्ट मिला. वापस नीचे के तल पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे कौन बताएगा कि ये टेस्ट भी पॉसिबल है. So this is what is special about integral yoga, that not just some escape into some spiritual delight, but also a coming back, so as to fly away into thy divine atmosphere and be able to return as thy messengers to the earth to announce the glorious tidings of thy approaching advent. O divine master, sublime friend, marvelous teacher, in a fecund silence I bow to thee. Fecund means a very pregnant silence. It's full of potentialities. खाली नहीं है वहां. वो खाली इसलिए क्योंकि वहां infinite possibilities हैं which are yet unmanifest. अभी वो उसी में से सब निकलने वाला है. So a silence which is full of infinite possibilities, pregnant with creative potential. And again, this all here that we read, that how everything in us is animated with the divine presence, but yet we not realize it because our thought is always turned towards something outside. और तभी कहा गया है कि थोड़ा अंदर आ जाओ, बीच बीच में आ जाओ, ताकि थोड़ी बात आगे बढ़े. हमें ये भी नहीं दिखता, जैसे ये यहाँ पे कह रहे हैं ना, विदाउट दी, this thought that animates and illumines the whole being would be vague, vacant, unrealized. What is it in us that makes us see the thought? अब हम ये जब बात कर रहे होते हैं कि ओ ये थॉट डिस्टर्बिंग थॉट है, ये वाली डिस्टर्बिंग थॉट नहीं है. ओ ये फीलिंग बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ये एटीट्यूड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, ओ ये वाला ठीक लग रहा है, ये हमको हायर लेके जा रहा है. ये कौन है हमारे अंदर जो बैठा है, जो ये बता पा रहा है? उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते. दैट विच इज इल्यूमाइनिंग द थॉट. थॉट का कंटेंट क्या है, वो कॉन्शियसनेस ही तो हमें बता रही है, बट उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है.
हमारा सारा ध्यान है उसके कंटेंट पे और उससे हमें मिलने क्या वाला है। हमारा ध्यान ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन बैठा है जो उसको अंधकार के अंदर वो प्रकाश दे रहा है। उस प्रकाश में मुझे दिख रहा है कि थॉट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। तो मदर कह रही है कि उसकी तरफ जरा ध्यान जाए कि दैट डिवाइन कॉन्शियसनेस इज सीटेड विद इन अस which is animating each thought, illumining each thought. और जिन जिन मोमेंट्स में हमारा ध्यान उस तरफ जाता है जो हमारे अंदर है, जो देख रहा है, उस मोमेंट में वी ऑल नो दैट वी सच ब्यूटिफुल states we experience, and yet we all have to go further and have those falls so that everything can be turned to light, even the darknesses can be turned to light. So looking at the one within us who is looking, Who is looking? turning the gaze within to the one who is the, है ना, जो जहां से सारा प्रकाश आ रहा है। सेंसरी इनपुट की भी जब हम बात करते हैं कि आज हमने ये चखा, अगर वो कॉन्शियसनेस नहीं है, कौन बताएगा क्या चखा? कौन चख रहा है? बिल्कुल, कौन चख रहा है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। So that's what she is saying, that my whole being is full of thy presence. I'm nothing without you, and that's true. Who are we without consciousness? And how many minutes in our day we spend stabilizing ourselves as consciousness? How many minutes? और जिन जिन मोमेंट्स में हम कर पाते हैं, उस मोमेंट में हमको उसी समय उसका टेंजिबल रिजल्ट भी मिलता है। In the moments where we are able to stay as consciousness and not lost in the content of consciousness. करना चाहिए. This is what practice is about, one of the parts of the practice. Yeah, so any last comments or thoughts, anyone? Okay, so I'm assuming there is nothing at the moment. Let's take a moment of silence then to share and dedicate the prasad or the merit with all the sentient beings near and far. May all of us have this utter relief when we are not obsessed about the little self that we think that we are. Thank you, everyone.